सुनिधि चौहान ने बताया रियलिटी शोज को फेक। सुनिधि चौहान ने रियलिटी शोज को लेकर किए बड़े खुलासे। सुनिधि चौहान का नाम बॉलीवुड की टॉप सिंगर्स में लिया जाता है एंड शी इज क्रेडिटेड फॉर सिंगिंग सम ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सॉन्ग्स इन बॉलीवुड लाइक शीला की जवानी, देसी गर्ल एंड क्रेजी कियारे। सुनिधि चौहान कई रियलिटी शोज की जज भी रह चुकी हैं। सुनिधि चौहान ने कहा है कि सिंगिंग रियलिटी शोज होते हैं फेक। एंड हाल ही में सुनिधि चौहान अपीयर्ड ऑन अ पॉडकास्ट और उन्होंने रियलिटी शोज को लेकर किए काफी अहम खुलासे। सुनिधि कई सारी सिंगिंग रियलिटी शोज को कर चुकी हैं जज और फिर साल 2018 के बाद उन्होंने कोई भी रियलिटी शो नहीं किया जज। और जब उनसे इस बारे में पूछा गया कि ऐसा क्यों, तो इस पर सुनिधि said, The singer revealed that they don't showcase reality and create fake narratives. She was quoted as saying, "There was no emotional drama, just fun and the performance you heard was the same as what was broadcast on TV." She added that almost every reality TV show is now edited and manipulated. In addition, Sunidhi said that the makers often try to highlight the positive side of a contestant. So whenever someone gets eliminated, the fan gets confused about its possible reason. All these things didn't seem right to her and she stopped being a part of it. The most shocking experience for Sunidhi was when makers asked her to promote some contestants irrespective of their performance, which further helped them in the business. इसके बाद सुनिधि चौहान also shared her views on सोनू निगम्स claim about lobbying in Bollywood और उनकी बात से सहमत होते हुए सुनिधि said, Sunidhi agreed that such lobbying exists everywhere, including award functions, music, films and reality shows and cannot be avoided. साफ तौर पर सुनिधि चौहान ने जहां रियलिटी शोज की हकीकत की बयां और वहीं सोनू निगम की बात को दी अपनी सहमति और इसी के साथ ये भी कहा that she hasn't received pay for singing many songs in her career. She said, I haven't got money for many movies. Even today they don't give me. They ask and I choose not to take it because I feel for this song I don't need money. At some places I would like to help, so I say my price and I sing the song. You don't want to hurt anybody's ego because everyone does not think like you. They might also not understand how you feel. इसी के साथ साथ सुनिधि चौहान ने ये भी एडमिट किया that she hasn't been paid for some of her most popular songs. सुनिधि चौहान के खुलासों के बारे में आपकी क्या राय है? Do let us know your thoughts in the comment section.